2 is find the largest and the smallest rational numbers among the following. ठीक है? अच्छा, I want you to have your notebooks with you so that you can tell me the decimal values of these three fractions. So I want you to divide it. You know how to do it. 4 will go inside the division, and 7 will be the one which will be dividing. So please divide it and tell me the answer. What is the answer of 4 by 7? Abdul Moeed and Abrish, please do it 0. quickly. Ma'am, which 0.5? 0.5? 0.57. 0.57. Abrish, are you getting the same answer, bete? Yes, ma'am. All right. So what about 7 by 15? 0. 0 point? Ma'am, 2. 2? Should not it be like it should be 4? Ma'am, Because 4. 4 now. 0.4. That's right. It is divided by 15. So it's the other way around, Abrish. You need to be very careful. Denominator is your divisor. Okay, so 15 is the divisor actually. So you're dividing 7 with 15. So you'll put a decimal here and this will become 70. And now 15 into 4 is 60, right? So then this 10 will come. And if you will add another 0, so it will be 100. So now what? 15 into 6 is 90, right? So this is the answer. 0.46. So in normal calculations, 2 decimal places are more than enough. Okay? So then what is the last value? Minus 7 by 4. Please divide it and tell me the answer. It is something minus 1 point. Remember to divide by 4. What would be the answer? Ma'am, at first we got the 0. Ma'am, at first we got minus 1 point. Ma'am, 1.7. 1.7? Abdul Moeed, beta, you are also having the same answer? Minus 1.7? Ma'am, minus 1.75. 75. That's right. 7 by 4 is minus 1.75. That is the correct answer. So now they're asking us this question. Then what is the largest and the smallest value? So can you tell me? They're all the largest. Which one is the largest? 1.75 minus. Oh, they are all minus. They're all... The smallest value is 1.75. That's right. Yes, minus 1.75 is the smallest value, because we know in the negative numbers, it is the opposite. The bigger the number, the lesser the value. And which is the largest value? Minus 0.46. That's right. This is the largest value. Very good. Okay? This is the largest value because they are all three negative numbers. Okay? Okay, now just look at this question. Question number 2. So I'm zooming in so that you can see the signs also. Actually, there are 4 rational numbers: 0, minus 5 by 6, 2 by 3, and minus 13 by 4. So according to the 3 rules we have discussed on Saturday, which one is the biggest value? Which one is the biggest? Ma'am. The biggest is 2 by 3. 2 by 3. Abrish, can you explain why 2 by 3 is the biggest value? हमने तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट नहीं किया. So how do we know that 2 by 3 is the biggest value? Ma'am, because all other 2 fractions have a negative sign. Very good. So because this is the only positive rational number, and we know that positive numbers are bigger than 0 and they are bigger than the negative numbers. So this is definitely the biggest number. So now now the smallest number comes. We know that 0 is bigger than negative numbers. So actually हमने इन दो को compare करना है. We need to compare only 5 by 6 and minus 13 by 4. ये दो negative numbers हैं. We need to compare these two to see which one is the smallest value. So what is 5 by 6 in decimal? What is 5 by 6 in decimal form? Just 2 decimal places I need. 0.8. 0.8? 0.8. 0.83. 0.83. So 0.83. That's right, 0.83. Okay? So you need to remember that the denominator is the divisor. So can you tell me what is the answer of minus 13 by 14?
13 by 14. 0.92. 0.92. Abrish, are you getting the same answer, bete? Yes, ma'am. Okay, so it is 0.92. So they are very close, you know. So which one is smaller? Ma'am, 0.92 minus 13 by 14. 0.92. Very good, because the negative numbers are opposite. So this is the smallest value. Okay, minus 13 by 14 is the smallest value, right? So very good, well done. So you are clear with this topic. Okay, so now let's look at this one. This question is a bit difficult question. There are 5 rational numbers in first part, and they're asking you to write it down in the ascending order. So Abrish, can you tell me what is ascending order? Ma'am, smaller to bigger. Very good, smaller to bigger. Ascending is increasing order. Very good, smaller to bigger. Okay, increasing order. So there are 5 rational numbers and they are in fractions. We need to convert them all into the decimal form, because then only we can compare. So ये कुछ तो बहुत ही आसान है. So what is 3 by 5? ये तो बहुत common सी fractions है. So what is 3 by 5 in fraction form? 3 by 5. Ma'am, Abrish, can you tell me? 3 by 5. 0.56. No, not 5, 6. अच्छा, why I'm saying कि ये बहुत आसान है, because ये देखिए ना, 3 by 5, 7 by 10 and 9 by 20. ये ऐसे ऐसे fractions हैं जिनके denominator को we can make 10 or 100. ठीक है? So it is 0.6. 0.6. ठीक है? So there is no need to divide because we can just multiply it with 2. तो ये 6 by 10 बनता है. तो 6 by 10 is 0.6. ठीक है? So now what is 7 by 10? Minus 7 by 10. So it would be minus 0. Ma'am, minus 0.7. ठीक है? So now just look at this number 9 by 20. इसको भी divide करने की जरूरत नहीं है, because just we can multiply it with 5. If we multiply this number with 5, so the denominator becomes 100. So this is 45 by 100. So what will be the decimal form? 0.45. Decimal would be 0.45. ठीक है? So now we are left with these two, 17 by 30 and 8 by minus 15. Achha, there is two minus sign, minus 17 by minus 30. So can you tell me what will be the sign in the answer? What is plus by another minus? It is plus. Abdul Mueed, is it clear? When two negative integers are divided, so the answer is a plus sign. So now one of you can do this division, 17 by 30. Let's say Mueed, you can do it. And Abrish, you can divide this side, 8 by 15. Please tell me the decimal answers. जी बेटा, what is the answer of 17 by 30? Please tell me after division. 17 by 30. Ma'am, just a second. I'm All right. zero point five six 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 six. So 0.5 with 6 and the bar. Okay. So 6 with the bar. What does that mean? This is a recurring decimal. Repeating. Ji, this is a recurring. Oh, sorry, मैंने इधर लिख दिया. So it should be on that side. Abrish, are you done with the division, bete? Ma'am, one minute. Okay. Zero point five 0.53. 0.53. Right?
Yes, ma'am. All right. So 0.53. So now we can see the smallest value we can write down in the start and the largest value we can write down on the right side, right? So which one is the smallest value? Negative values, maybe we have three negative values. This is negative, there's bulky two negative values. These two are negative values. Which is the smallest? Ma'am, minus 0.53. Minus 0. I 53, I mean 8 by minus 15. No. Which one is the smallest? Think again. 0.53 or 0.7? Which is smallest? 0.7. 0.7, because 0.7. 0.70 is Okay, bigger. 0. That's why it is the smallest. So I will write down minus 7 by 10, yeah, minus 0.7. Then it is minus 0.53. So my 8 by minus 15. Okay, this is the second. Now we are done with the negative numbers. Now comes the positive numbers. Just look at the positive numbers. This is 0.6, 0.56, and 0.45. So positive numbers may we write it down normally. So which one will come? 0.6 first. 3 by 5. 0.6 is the biggest number, na? So that will come here. Like 3 by Yes. 5, 0.6 will come here. ठीक है? इसके बाद which number will come? So it would be 0.45, 9 by 20. 9 by 20. अगर आप ये पहले लिख देते हैं तो that is the biggest number coming in the middle. ठीक है? So then it is 0.56. So 0.56 is minus 17 by 30. Right? And the last would be this one. Is it clear? Yes. Yes, any question? All right. So can we let's skip the second question? You can do it as a home task maybe. Or do you Okay. want to solve it? Yes, ma'am. You can do it as a home task, Abrish? Yes. All right. Abrish is Yes, also ma'am. fine. All right. So now just look at this question. Question number 4. Put the numbers on the number line. So number line is already there. You just need to plot these numbers on the number line, on the given number line. So ये एक ऐसा question है जो हमारे पास papers में आता है. Like literally paper में ऐसा question नहीं आता कि draw the number line and then plot it. Just like the questions we were doing on Saturday. ठीक है, उसमें number line draw करना is very difficult also ना. So ये इस तरह के question paper में बहुत commonly आते हैं. When the number line is already there and there is a marking on the number line as well, and you just need to locate these, I don't know, 6 rational numbers. ठीक है? So we will start with the first question, which is comparatively easy. आपको एक बार number line नजर आ रही है. So there are, this number line is from -5 to 5. ठीक है? So the first number is 5. So you can exactly plot it here, right? Just mark the first rational number on the number line. So then is 2. So 2 is also easy. This is 0, 1, and 2. There is an exact this position where number 2 is lying. ठीक है? So then is minus 5.5. अब देखिए number line is still minus 5. So where minus 5.5 will go? Like this is minus 4. So where minus 5.5 will go? Will it be on the right side or on the Ma'am, in left side? between 1 and 0. 1 and 0? Like here? This is 0 now. This is minus 1, minus 2, minus 3. And this is 1, 2, 3, 4. Right? So where will be this minus 5.5? Why it will be between 0 and 1? It is 5.5, not 0.5. So where this will be 5.5? Ma'am, after 5. After this minus 5. Actually, they are playing this trick. ये बाकी तो बहुत आसान है. This is the confusing one. Mostly students will make mistake in this. It is minus 5.5. It is not here. This is wrong if I plot it here because ये तो minus 4.5 है ना. So this is actually coming here after minus 5. So this is the position where minus 5.5 will come, right? Because minus 5.5 is smaller than 5, minus 5. So that's why it is on the left side of minus 5. I told you ना number line में जितना हम left side पे जाते हैं उतने ही numbers छोटे होते जाते हैं, ठीक है? So that's why this is minus 5.5. Next is 3. Now 3 is very easy because it is the exact position. This is your 3, right? So now next is 4.25. So where would be 4.25? Can you tell me, Abdul Mohit, where will be 4.25? Ma'am, 4.2 after 4. After 4, but it would be more towards 4, okay? Because it is 4.25, Yes, so ma'am. just more towards 4, not in the middle, just more towards 4, okay? Lastly, minus 0.5. Abrish, can you tell me where this will be? Minus 0.5. Now it is Ma'am, 0. between 0 and between minus 1 and 0. Very good. So here it will be minus 0.5. So
So just if this is 3 marks question, you will get 3 marks for each correct marking. ठीक है, ये पेपर में बहुत common question आता है. अच्छा, next question is when there are mixed numbers, some are fractions, there are decimals also. So there is only one fraction actually, 3 by 4. So it's a very common fraction. Can you tell me what is 3 by 4 in decimal form? 3 by 4 in decimal. 0.75. 0.75. Very good. Right? So now it is the same number line, you can see. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. And on the other side of the 0, on the left side, it is -1, -2, -3, -4. Right? So now you need to tell me, okay, where this minus 0.75 would be. -3 by 4 is where? Between which two numbers? Ma'am, -1 and 0. Between 0 and minus. So more towards which number? More towards -1 because it is 0.75. Very good, very good. So this is more towards -1. So probably here somewhere. So -3 by 4. Is it clear, Abdul Moeed? -3 by 4 is more towards -1, right? So then 0 is easy. Just put it exactly on the 0, this dot. Then -3 is also easy. This is -3, right? So then minus 0.7, sorry, plus 0.75. So Abdul Moeed, 0.75 will be where? Between which two numbers? Yes, ma'am. 0.75 would be where on the number line? But you need to be attentive. Between 1 and 0. So more towards which number? 1. More towards 1, right here. So approximately here 0.75, right? So then minus 1.8. Between which two numbers? Minus 1.8. Ma'am, -1 and -2. Between -1 and more towards which number? -1. -1? Yeah, -2. -2. -2 because 1.8 is close to -2. So this is where -1.8 is. Okay, so lastly -3.5. Abdul Moeed, which two numbers? Between which two numbers -3.5 is? -3 and -4. -3 and -4. So move in the middle because it is 3.5. So -3.5. Yes. Moeed, I want your answers more frequently, bete. अच्छा, lastly थर्ड पार्ट को देखें. सो एक तरीका तो ये है ना, जैसे हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया. नाउ दिस इज 1.37. सो 1.37 इफ आई डोंट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, सो ये किसके दरमियान में, कहां पर होगा? 1.1 whole 3 by 7, where it would be? Ma'am, that 1 and 2 on the positive and in the 1 and 2. 1 and 2. So will it be more 1 or more towards 2? More towards 1. More towards 1, but slightly more because ये बहुत ही क्लोज है, मिडिल में ही ऑलमोस्ट. तो यहाँ पर आपने डाल देना 1 whole 3 by 7. ये मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन हाफ मार्क का आता है पेपर में, सो यू नो यू कैन जस्ट एस्टिमेट इट. 2.5. सो एग्जैक्टली वेयर? 2.5 in the middle of 2 and 3. Very good. In the middle of 2 and 3. So this is basically 2.5. And 3.5 in the middle of 3 and 4. 3 and 4. Very good. So this is 3.5. Right? So what is 2? What about 2.2? Ma'am, and the 2.5 is already there. 2.2 is near to 2 and between 2 and 3. Not near 2. Yes. 2.2. ठीक है? 2.5 में, or it should be towards 2. अच्छा, what about 4 whole 5 by 9? 4 wholes 5 by 9. So it will be between which two numbers? Between 4 and 5 and near 5. So near 5. So it's almost in the middle. 4 whole 5 by 9. Okay. So lastly, we are having 30 by 6. So 30 by 6 is exactly 5. So we can just mark it here. Okay. So this dot is 30 by 6. Right? So this is how you're going to plot it. So the last one was too easy. See, beta? And third part was too easy. This was too easy. Right? So now, because all are positive numbers, na, to hame zyada sochna nahi pada. Achha, now let's look at the remaining questions of this exercise. We will just take 5 minutes and we will just be done with it. 9, 10, and 11 question. So you need to answer me one by one, okay? So first part is write down two integers less than -100. So tell me one, because ये open-ended question है, तो कोई भी answer हो सकता है. जी please. 151. 100 and -150 -151. Can you tell me again? -150 -151. -150
minus 151. Abrish, can you tell me any two? Less than minus 100. Ma'am, minus 160. All right, minus 116. Acha, what would be the Ma'am, next number? Minus 100 से lesser कौन सा number है? What will come after minus 100? ma'am, What is the lesser minus value? 10. Minus Minus 101. 101. Very good. Excellent. ठीक है. So now the second one. Write down three non-negative. Non-negative का क्या मतलब हुआ? Ma'am, Non-negative. positive. 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 Are the positive integers. So three non-negative integers greater than minus 10. Any two values. Three Ma'am, values. ma'am, 2, 3, and 5. So you are on the safe side, 2, 3, and 5. Abdul Mohit, can you tell me any three positive integers greater than minus 10? Minus 9, minus 4. नहीं, minus नहीं हो सकता ना. Positive integers. You need to check two conditions. Greater than minus 10 भी हो, 40 and 45. 40 and 45. ठीक है. So you need to pay attention of the both conditions. ठीक है. You can even write 0 because 0 is an integer और positive है लेकिन mostly So write down four integers between. अब ये वही word आ रहा है between जो आपके homework वाले question में आया था. Write down four integers between minus 7 and 0 and there is a new word inclusive. So can you tell me what does that mean? Inclusive. दो words है ना. One is inclusive and one is exclusive. Exclusive. So inclusive is Ma'am, including everything or covering that's right, included. board scope. ठीक है. And exclusive is excluding, like excluded. जैसे आप देखते हैं ना कहीं पे आपने रियल लाइफ में कहीं पे ये वर्ड्स देखे जैसे अक्सर लिखा होता है like this there is a deal on a burger shop and it is written get two zinger burgers on 799 rupees और नीचे छोटा सा लिखा होता है tax are exclusive. तो इसका ये मतलब है कि this 799 but you need to pay the tax also. ठीक है. उसके ऊपर टैक्स लगेगा आपका. तो ये exclusive mean कि this is excluded. Inclusive mean कि that thing is included. ठीक है. So now they're saying write down four integers between minus 7 and 0. Inclusive, like minus 7 is also included and 0 is also included. So can you tell me the four integers between between तो चला ही गया ना because it is inclusive. ठीक है. So can you tell me four integers? Minus 7 to 0. Minus 8, minus 5, minus 6. Minus 8 नहीं And होगा बेटे. Minus 5 होगा. Yes. और minus कौन? 6 Minus 6 हो सकता है. Yes. and minus 4. Minus 4 हो सकता है. So मोहित और कौन कौन से integers हो सकते हैं? And minus 3 and minus 2 as well. That's right. So मोहित I'm asking you बेटे और कौन सा आंसर हो सकता है? Minus 2, minus 3, minus 1. 0. 0 also. Very good. So the border lines are also inclusive. They will also come in the answer. Okay, you can write them down also. Okay. So now the D part. Write down two numbers between minus 5 and minus 4. Between का क्या मतलब हुआ? Like you cannot take you cannot say minus 5 and minus 4 also. So what are the numbers between minus 5 and minus 4? So what do you think? Is there any rational number between minus 5 and minus 4? No. What do No, you ma'am. think? No. Minus 5 और minus 4 के बीच में is there any rational number? No, ma'am. What about minus 4.5 then? Is it in between? Yes, ma'am. It is? Abdul Mohit, is minus 4.5 between these two numbers? Ma'am, 5 and 4. क्या? Like is minus 4.5 between minus 4 and minus 5? Is it between them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beta, I want your attention please. So do you think how many numbers are between minus 5 and minus 4? अगर आपसे कोई पूछे कि दो integers हैं एक minus 5 एक minus 4 उसके बीच में कितने rational numbers हैं? So what you will say? How many? Ma'am,
9. They are unlimited. They are unlimited. You cannot even count them. Why? Because देखो, you are saying 9, Abrish, because you are thinking about minus 4.1, 4.2, है ना? Till 4.9. Yes, ma'am. तो हम कहें minus 4.55. तो ये कहाँ है? ये भी तो उन्हीं के बीच में है ना? तो अगर हम कहें minus 4.977, तो ये कहाँ पर है? This is also between minus 4 and 5. Are you Yes, getting the? ma'am. We can increase the decimal points and we can, have an infinite number between just these two integers. Because rational numbers are uncountable even between the two numbers, right? So iska answer mein there are unlimited answers you can give, just like the other ones maybe. ठीक है बेटे? Is this point clear? Yes, ma'am. All right. Yes, So ma'am. all right, very good. So now who can tell me the answer? बल्कि मैं आप दोनों से आंसर पूछती हूँ. Bernard said, since 7 is greater than 4, then minus 7 should also be greater than minus 4. Is this statement true or false? Explain your answer. So what do you? False. Ma'am, false. Correct. Why? Ma'am, because there's a rule that negative smaller is bigger and the bigger one is smaller. The smaller the number, the bigger the value. ठीक है? So very Yes. good. So Abdul Mohit is also having same explanation, or you can write down in Yes, ma'am. simple words. Because in negative numbers, the rule is opposite. ठीक है? कुछ भी आप explain कर सकते हैं. This is a false statement. This is not true, right? So the last one is also a question related to science. So they are giving you one scenario and they are saying the boiling point of alcohol is 80 degrees Celsius and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. When a mixture of alcohol and water is heated to a temperature of 95 degrees Celsius, only water will remain. Achha, I'm stopping here. So why only water will remain? Where the alcohol will go? Ma'am, evaporate. That's right, it will evaporate because the boiling point is 80 and now the temperature is 95. वो तो 80 पर ही evaporate होना शुरू हो जाएगा, right? Mohit, this is clear now, Yes. right? This Yes, scenario is ma'am. clear. They are just giving you one scenario. Now the question is, they are having three mixtures. The boiling points of liquid nitrogen, liquid xenon, and liquid oxygen. There are three gases. Boiling point are minus 196, minus 108, and minus 183. Okay? So mixture of liquid was kept at a temperature of minus 215. अब देखिए minus 215 पे when it was kept, so all the three were in liquid form. ठीक है? Because this temperature is lower temperature than all the boiling points. ठीक है? अच्छा, now the mixture is warmed to a temperature of minus 185 degrees Celsius. Now this is the temperature. Which of the liquids will turn into gas? इनमें से कौन से liquids gas बनेंगे? 196 is the temperature of nitrogen, this is the temperature of xenon, and 183 is the temperature of oxygen. Ma'am, nitrogen will be evaporating. Sony, who? Which? Nitrogen. So Mohit, what do you say? Nitrogen. Mohit, what do you say? Do you think nitrogen will be evaporated? Ma'am, your voice is cutting. But I'm asking you, do you think only nitrogen will evaporate at this temperature? Minus 185 Ma'am, degrees it will Celsius. evaporate. It will Yes, evaporate. ma'am. What about It will. it will? What about xenon? Xenon का temperature है, boiling point है Ma'am, minus 108. it, Will it evaporate? no, ma'am. It will not evaporate because the temperature is still lower. ठीक है? Negative numbers में opposite होता है ना. This is still a lower temperature. What about minus 183? Oxygen Ma'am, it will also not evaporate. will also not evaporate. So oxygen will also not evaporate. So only nitrogen will evaporate. Only nitrogen will change from liquid into a gas. ठीक है बेटे? Is it Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Mohit, is it clear बेटे? ठीक है? Yes, These were ma'am. the questions left from this exercise. ठीक है? All right. So now we are going to go to the second learning objective. अच्छा, let me show you the curriculum document. Objective मैं आपको दिखा देती हूँ. Second जो हम अभी करने लगे हैं. I am skipping the two objectives today because हम last objective करेंगे, which is related to the topic we are doing. Okay, let me show you the learning outcomes. First one we are done. We are done with this one. You know how to compare and how to write rational numbers in ascending and descending order. ठीक है? Are we clear with the first learning objective? Yes. All right. So now we are skipping these two for now. देखिए, second is related to squares, cubes, square roots, cube roots.
and the third is also estimate. ये दो अभी हम छोड़े हैं, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे. So these two we are skipping. अब देखिए fourth learning objective is again related to the first one. Understand and explain the real number system through the flow chart and the Venn diagram. So we need to understand the real number system, right? So flow chart, ये दोनों different तरीके हैं उसको represent करने के. So let me draw the real number system for you. I hope you are already familiar with this. So if you are not familiar, you need to tell me. Okay. So let's talk about real number systems. Let's make a flow chart. Real number system. So can you tell me, Abrish and Mohit, the real number system is divided into which two main groups? Ma'am, negative and positive. No. Negative, positive तो integers है ना. Real number system में दो main groups हैं. One is called rational numbers. Real numbers rational numbers है, and then there are irrational numbers. Right? ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है. जो रियल नंबर्स हैं उनका क्या मतलब है? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, नॉट ऑल, एक्चुअली देयर आर मोर नंबर्स, लेकिन अभी आपके स्कोप में हम ये कहते हैं कि रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स इन मैथ. ठीक है, सो दे कैन बी ईदर रैशनल और दे कैन बी, अगर एक नंबर रैशनल नंबर है ना तो वो फिर इरैशनल नंबर नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो रियल नंबर्स आर ईदर रैशनल और इरैशनल. अगर एक नंबर रैशनल नंबर है तो वो इरैशनल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर टू आइसोलेटेड ग्रुप. ठीक है, जो नंबर इरैशनल है वो रैशनल नहीं हो सकता. अच्छा, नाउ रैशनल नंबर्स आर, इरैशनल में देयर इज नो अदर डिवीजन. ठीक है, बट रैशनल नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं. रैशनल नंबर्स इन फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स. दैट्स राइट. सो फ्रैक्शंस, इंटीजर्स. रैशनल नंबर इज अ बिगर ग्रुप. उसके अंदर उससे छोटा ग्रुप कौन सा आता है? इंटीजर्स. उससे छोटा ग्रुप कौन सा आता है? होल नंबर्स. ठीक है, और उससे छोटा ग्रुप कौन सा आता है? उससे छोटा ग्रुप आता है नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब देखो, अगर मैं लिखना शुरू करूं, अब मैं इनकी, अगर आपको इनको सेट नोटेशन में लिखना शुरू करूं कि इस नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है. हमने कल भी ये बात की थी. कैन यू टेल मी व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, अब्दुल मोईद? दे आर द काउंटिंग, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स मैम 0 0 1 2 3 4. ठीक है, नेचुरल नंबर्स के पास जीरो नहीं था. जब मैथ स्टार्ट हुआ ना, जब मैथमेटिशियंस ने मैथ स्टार्ट किया, तो पहले उन्हें सिर्फ पॉजिटिव, असल में मैथ का पर्पस क्या था कि हम चीजों को गिन सकें. हाउ मच मनी वी आर हैविंग, हाउ मेनी chocolates you are having, right? So counting was the main purpose. So if somebody is giving you money, so you were having some money earlier, so how much is the total now? ठीक है, so बाद में जब मैथ्स को इवॉल्व करना शुरू किया तो मैथमेटिशियंस को ख्याल आया कि देयर शुड बी अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट नथिंग इन मैथमेटिक्स, लाइक जीरो इज लाइक व्हेन यू आर लेफ्ट विद नथिंग. ठीक है, आपके पास चॉकलेट्स हैं, आपने दोनों खा ली, दो चॉकलेट्स थी, दोनों खा ली. अब हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव? तो दे थॉट कि हमारे पास में नंबर होना चाहिए कि जो ये रिप्रेजेंट करे कि देयर इज नथिंग लेफ्ट. तो जीरो इज फॉर दैट पर्पस. Later on, when they did operations, like they did business, for example, so then they realized कि sometimes the answer is not a positive number. There are negative numbers also. So in teachers आपके क्या है? Positive and negative numbers. ठीक है, they are positive and negative numbers, but there is no decimal or fraction. Integers are whole numbers. ठीक है, सिर्फ they are having signs. ठीक है, so then there was a need of decimal numbers, fractions. So rational numbers के पास क्या आ गया? Fractions and decimals also. Are you getting the point? So then what will come here? अगर हम सारे नंबर्स को यहाँ डाल देंगे तो फिर इरेशनल नंबर्स कौन है? ये कौन से नंबर्स हैं? अब्दुल मोईद, अगर सारे नंबर्स यहाँ, सॉरी, I don't know about this. जी बेटा, I cannot hear you. Sorry beta, what you said? There in irrational numbers there will be non-terminating and recurring numbers. That's right. So there are few irrational numbers. एक तो आपने जब पढ़े ना, आपने पढ़ा like there are decimals 3 तरह के होते हैं. आपने ये पढ़ा है ना? I'm writing with a different color. Decimals 3 तरह के. मोहित, कौन से 3 तरह के decimals होते हैं? मैम recurring, non-recurring and non-terminating. एक होता है terminating, ठीक है, एक होता है recurring, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग. ठीक है, अच्छा, अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, ये तो रैशनल है. ठीक है, जो रैकरिंग डेसिमल्स हैं ये भी रैशनल है.
लेकिन ये जो थर्ड टाइप है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, ये आपके पास क्या है? इरेशनल। समझ आ रही है? मोहित, आई कैन नॉट हियर योर वॉइस बेटे। यस मैम। ठीक है। अब जो ये तीन टाइप्स ऑफ डेसिमल्स है ना, इनमें से दो टाइप्स तो रैकरिंग है, लेकिन ये जो थर्ड टाइप है ना, नॉन रैकरिंग, ये कौन सी टाइप है? ये इरेशनल है। जैसे जब आप लिखते हैं पाए, पाए आप लिखते हैं ना 3.14769, तो पाए की पाए इज नॉन रैकरिंग बिकॉज इसका कोई पैटर्न नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी से पाई इज इरेशनल। ठीक है। एक तो ये हो गए, एक तो हमें पता चल गया इरेशनल नंबर्स हैं नॉन रैकरिंग, जो नॉन रैकरिंग डेसिमल्स है ना वो इरेशनल है। अच्छा, उसके अलावा कौन से हैं? उसके अलावा पूरे मैथ्स में एक और टाइप है विच आर इरेशनल। वो कौन से रूट्स हैं? रूट्स हैं वो बेसिकली जो अनसॉल्वेबल रूट्स हैं। अब अनसॉल्वेबल से मेरा क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देखो, अगर हम which can be solved, लेकिन the answer is not a whole number. For example, अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट लूं तो इसका आंसर क्या आता है? What is square root of 1? Do you know what is a root? अब्दुल मईद और अब्रिश, आपको ये पता है ना, ये साइन और इसका मतलब पता है ना रूट का? यस मैम। यस। ठीक है। What is square root of 2? 4। No. अब ये हमें नहीं, we cannot find it using like without calculator we cannot find it. ठीक है। Same is the case with square root of 3. हम इसको नहीं निकाल सकते, हमें कैलकुलेटर चाहिए। What is square root of 4? अब आपको पता होगा what is square root of 4? मैम 2। 2। ठीक है। अब ये जो रूट है ना, square root of 1 and square root of 4, ये कहलाते हैं सॉल्वेबल रूट्स। ये दोनों क्या है? रैशनल है। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये इरेशनल है। ये बात समझ आ रही? यस मैम। व्हाट अबाउट मोहित, आपको ये बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। जो रूट्स जिनका आंसर होल नंबर आता है, जैसे देखो 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, है ना? लेकिन व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 5? अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम उसको कहते हैं वो अनसॉल्वेबल है, लाइक हम उसे मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए कैलकुलेटर हमें चाहिए होता है। तो ऐसे जितने भी रूट्स है ना, वो इरेशनल है। अब अगर आप गौर करो तो रूट्स में कम ही रूट्स ऐसे हैं जो सॉल्वेबल हैं, यानी रूट्स ज्यादातर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, और कम कम रूट्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनके रूट्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है बेटे। सो ये आपने याद रखना है कि रियल नंबर सिस्टम इज ऑफ टाइप्स रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है। इरेशनल में बस ये याद रखना है, नॉन रैकरिंग और रूट्स जो होते हैं कुछ सॉल्वेबल नहीं होते, वो रैशनल इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड। रैशनल नंबर्स के पास सब ग्रुप्स हैं। इंटीजर्स आर रैशनल, होल नंबर्स आर रैशनल, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो रैशनल। ठीक है। नाउ कीपिंग इन माइंड दिस, ठीक है, आई विल शेयर दिस पिक्चर आल्सो। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही अटेंटिव होकर आपने बैठना है और आपने मुझे बहुत ही ध्यान से बताना है। सो दे आर आस्किंग यू टू, अब देखें ये वही ग्रुपिंग है जो मैंने ड्रॉ की थी, वो फ्लो चार्ट थी और इन्होंने वेन डायग्राम बनाई है। ठीक है। सो रियल नंबर सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज रैशनल, अदर इज इरेशनल। ठीक है। रैशनल के पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं? इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? इज दिस वेन डायग्राम क्लियर? और ये रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होगा वो इरेशनल नहीं होगा बिकॉज ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजर रहे। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मैथ्स में जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे इंग्लिश में वॉवल्स कैन नॉट बी कॉन्सोनेंट्स, सो एक रैशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है बेटे आप दोनों को? यस मैम। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स प्लेस देम इन द, let's try to place them in the Venn diagram. Let's see if we can do it or not. So the first one is, Mohit, can you see the screen also? यस मैम। अच्छा, now let's start with the first number 1. तो आपने मुझे बारी बारी बताना है where this will go. 1, is it rational or irrational? 1. रैशनल। इज रैशनल। 1 is मैम rational. रैशनल। अच्छा, आप देखिए रैशनल में ये कहाँ पर जाएगा, किस जगह पे जाएगा? यहाँ रैशनल, इंटीजर्स, होल, तो ये सबसे मैम अंदर वाले इंटीजर्स। ये नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर भी है। जैसे देखो ना, जैसे इसकी इसकी एग्जांपल इसी तरह लें, जैसे देखो वी आर लिविंग इन चकवाल, सो चकवाल इज इनसाइड पंजाब, पंजाब इज इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान इज इनसाइड एशिया। अब अगर आपको आपको लोकेट करना है, मैंने देखना है कि अब्रिश और अब्दुल मोईद इस टाइम कहाँ पर हैं,
So I will see, oh, they are Asians, so we will go in the Asia. Then we will say they are Pakistani, so हमने पाकिस्तान में आ जाना. पाकिस्तान में they are Punjabis, पंजाब में आ जाए. पंजाब में they are Chakwalians, so चकवाल में आ जाए. So the smallest, you can say the group जिससे आप बिलोंग करते हैं वो probably is चकवाल according to this division. So according to the number system, वन जो है ना वो रैशनल भी है, वो इंटीजर भी है, वो होल नंबर भी है, लेकिन सबसे बेसिकली वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है. सबसे पहले वो किस ग्रुप में आया है, वो नेचुरल नंबर में आया है. ठीक है, सबसे छोटा उसका ग्रुप कौन सा है, नेचुरल नंबर का. ये बात समझ आ रही है बेटे? ये बात समझ आ रही है? अब्दुल मुईद, आपको भी ये बात समझ आई है कि व्हाई वी आर नॉट राइटिंग वन इंटीजर्स में, हम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ पर जब हम नेचुरल नंबर में लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन सब ग्रुप्स में आ गया है. वो होल भी है, वो इंटीजर भी है, और वो रैशनल भी है, और वो नेचुरल नंबर भी है. समझ आ रही बात? तो जो सबसे छोटा ग्रुप होगा ना उस नंबर का, हम उसके अंदर उस नंबर को लिखेंगे. नाउ लुक एट दिस जीरो. नाउ वेयर दिस जीरो विल गो? जीरो सबसे पहले किस ग्रुप में गया था? मैम होल नंबर. होल नंबर. अब जीरो को हम नेचुरल में नहीं लिख सकते बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. लेकिन यू इफ यू विल राइट इट इन द होल नंबर, तो होल नंबर इंटीजर का पार्ट है, इंटीजर रैशनल नंबर का पार्ट है. इसका मतलब है जीरो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और रैशनल भी है. जैसे हम चकवाल में भी मतलब चकवाल से बिलोंग करते हैं, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, और हम पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं. ठीक है, सबसे छोटा ग्रुप आप लिखते हैं. जब आप सबसे छोटे ग्रुप में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इन सब ग्रुप्स में आ जाते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. 11.23 किस ग्रुप में जाएगा? डेसिमल. किस ग्रुप में जाएगा 11.23? कौन सा डेसिमल है? मैम इंटीजर्स. इंटीजर में तो डेसिमल नहीं होता. इंटीजर में तो रैशनल. यहाँ पर आएगा 11.23. राइट, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स. अच्छा, नाउ 3/4. 3/4 is a fraction. The fractions are also rational. Yes. Now the next is -4 is integer. आ जाएगा. -4 is integer. इंटीजर में जाएगा बिकॉज सबसे पहले ये इंटीजर है. -4 is rational And also. ठीक है. 3 What is about also whole number. 3 is a natural number. ठीक है. सो 3 इज सबसे पहले होल भी है, लेकिन 3 सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर. Natural. ये बात समझ आ रही है? ठीक है. Yes. तो नेक्स्ट इज -89 is integer. वेरी गुड. -89 इज इंटीजर. अब्दुल मोहित बेटे, आपको समझ आ रही है? प्लीज बी अटेंटिव. अच्छा, नेक्स्ट इज 27.87. और ये 3 डॉट लगे हुए. ये 3 डॉट किस लिए होते थे? Irrational. इरेशनल नंबर है, ये नॉन रैकरिंग नंबर है. सो इट विल कम हियर 27.87. ये जो 3 डॉट्स है ये बता रहे हैं कि ये इसकी डिवीजन खत्म नहीं होगी. अच्छा, व्हाट अबाउट पाई? पाई आपने इसको देखा सर्कल में, 2πr, पाई आर स्क्वायर, है ना. पाई इज व्हाट? पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर. पाई इज आल्सो रैकरिंग. ठीक है, इसकी भी ये आपने याद रखना है. पाई इज मैथमेटिकल कांस्टेंट और इट इज इरेशनल नंबर. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2, इज इट सॉल्वेबल रूट और नॉट सॉल्वेबल? Irrational. नॉट सॉल्वेबल. इसका आंसर डेसिमल में आता है. व्हाट अबाउट 144 का स्क्वायर रूट? मैम 12 it is a rational. 12 आता है, और 12 कहाँ पे जाएगा? Natural. नेचुरल नंबर्स में जाएगा. सो दिस इज 144, ये नेचुरल नंबर बिकॉज इसका आंसर 12 आता है. सो लास्ट इज -9/2. -9/2 इज -4.5. ये फ्रैक्शन ही है ना, तो फ्रैक्शंस किधर जाएंगी? यहाँ पर रैशनल. -9/2. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन? No ma'am. इज इट क्लियर? मोहित, आपको भी समझ आई है बेटे? Yes. Yes ma'am. ऑलराइट. अच्छा,